Hello guys, a very good afternoon. Welcome to my channel UPSC Decoded. I wish you all a very good afternoon. Guys, आज का जो सेशन है बहुत ही important होने वाला है because today your eyes are going to open literally. जी हाँ, आज आपकी आंखें खुल जाएंगी बिकॉज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो आपके साथ शायद कोई नहीं करेगा और मे बी सम वेरी फ्यू पीपल वुड शेयर दो सीक्रेट्स. But before that, let's check out a question that is from CSE 2016 prelims. Consider the following question with reference to the economic history of medieval India. The term Aragatta refers to चार आपके पास options हैं. You can go through them. They are not very long, not very difficult, not very time-consuming question, but apparently it's a difficult question. The answer is C, that is water wheel used in the irrigation of land. Next question, another one. Let's check out your knowledge, whatever stage you are in, whether you are a beginner, intermediate stage or advanced stage aspirant. Let's check out what is your standing with regard to your preparation. Banjaras during the medieval period of Indian history were generally agriculturalists, warriors, weavers or traders. The answer is traders. Guys, these questions apparently look very difficult. Actually, जब ये question पूछे गए थे 2016 में prelims में, it blew the mind of a lot of aspirants, a lot of so-called experts from the industry, and everybody was like scrambling for books, for the sources, कहाँ से ये questions उठाए गए. But the thing is that these are the questions which are contained, the topics which are contained in the NCERT books of class 7th. Yes, अगर आप 7th स्टैंडर्ड की NCERT उठाएंगे आपको दोनों सवाल के जवाब मिल जाएंगे. यूपीएससी एस्पिरेंट्स को चेक करना चाहता था कि उन्होंने NCERTs पढ़ी है कि नहीं, बिकॉज जो प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को लगता है कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल किया जाए, बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एनरोल किया जाए जहाँ पे वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, 50,000, 1,50,000 or even more than that for various plans and offers. And these platforms and institutes, they promote their own material. They claim that their material is the best and they just make a sort of passing reference to the NCERT's utility of NCERTs at best. या तो वो बिल्कुल इग्नोर कर देंगे या NCERTs को बोलेंगे हाँ आप पढ़ सकते हो एज अ मैटर ऑफ चॉइस. But that is really a very fatal strategy if you are an aspirant. And this I can tell you because I have been there, I have done that. I have been an aspirant, I have written the UPSC mains multiple times, and I am also a faculty. I've been associated with some of the top brands. So basically these platforms and institutes, they are just commercial engines. They are there to make money. And a lot of students fall for the trap. It's very simple guys. आपको UPSC की preparation करनी है, बहुत simple है. You don't have to prepare for IITs or IIMs. Self study is also important, but how I'm going to share with you. But before that, please do subscribe the channel, do like this session if you're liking it so far, and also do share it with your friends. And also please comment में बताइए कि आपको क्या लगता है NCERTs का importance है या नहीं, और कितना इंपॉर्टेंस है. आपको रियली लगता है कि NCERTs आर द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर UPSC, और दे कैन बी सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल, यू कैन मे बी चूज टू इग्नोर देम. ऑलराइट, सो लेट्स चेक आउट द बेनिफिट्स ऑफ NCERT बुक्स फॉर UPSC. क्या क्या फायदे हैं अगर आप NCERT बुक्स को पढ़ेंगे. गाइज, यू सी, as I said, I have written the exam multiple times, the mains, and I have also years of experience of mentoring and tutoring civil services aspirants. I have been associated with some of the top brands. I can say for sure from an insider perspective and from an outsider perspective, NCERTs are the foundation stone of your UPSC preparation. अगर आप UPSC एस्पिरेंट है, आपने NCERT नहीं पढ़ी, या मे बी आपने सिर्फ लेट्स से 11th और 12th स्टैंडर्ड की NCERTs पढ़ी और थिंकिंग दैट 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड का मुझे क्या करना, दीज आर लाइक वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, बट दैट्स अ वेरी डेडली मिस्टेक.
आपको 6 स्टैंडर्ड से लेकर 11-12 स्टैंडर्ड तक सारी की सारी एनसीईआरटीज जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो पढ़नी है। आपको क्या क्या बुक्स पढ़नी है मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज हैव सम पेशेंस। ऑलराइट, सो लेट्स चेक आउट द बेनिफिट्स। क्या फायदे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने के? तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट हेल्प्स इन गिविंग डायरेक्शन टू योर प्रिपरेशन। नाउ इफ यू आर अ बिगिनर, then it's very difficult to get a direction. In fact, I have seen that many aspirants, they join the expensive coaching institutes or online platforms just because they want a direction. It's not that they are clueless or they don't have their own mind, it's just that they want a direction. In fact, I also joined a very expensive coaching institution in Delhi, by the way, a couple of years ago, just because I wanted some basic direction and guidance, just a path. Otherwise, it's entirely upon the individual, right? So it gives a good direction. Basically, आप NCERTs पढ़ेंगे, जितना आप NCERTs पढ़ेंगे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगा, आपको पता चलेगा किस डायरेक्शन में जाना है, किस कैसे प्रिपेयर करना है, और आप स्ट्रैटेजी वगैरह बेसिक लेवल की स्टार्टिंग में आप प्लान आउट कर सकते हैं. The second important benefit that the NCERTs are very simple to understand, not very difficult, basic. सो बेसिस से, अगर बेसिक से आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, इस आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी, मोर इम्पोर्टेंटली, because I have seen that in those coaching institutions, and I was a student in a couple of coaching institutions, and I was also faculty, by the way, in a couple of institutions, so I can give you both the perspective that directly they jump onto the more sort of advanced material, but it's not a very good strategy. स्टार्टिंग में ही एक तरीके का डैम्पनर हो जाता है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, पहले आप एनसीईआरटीज पढ़िए, 2-3 महीना ढंग से जमकर एनसीईआरटी पढ़ें ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए. बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट द एग्जाम एटलीस्ट इन 2022, नॉट इन 2021. 2021 के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं बचा है. इट्स टू लेट इफ यू आर reading NCERTs now for 2021. June 27, you know, is the exam. But I'm talking about 2022 and beyond. There is sufficient time. बहुत आराम से आप पढ़ सकते हैं at leisure, and you can create and build interest with regard to various subjects. Simple to understand, basic, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे आपको. इतनी सॉलिड नींव रख देगी एनसीईआरटी बुक आपकी, so that you don't face any problem in the exam. Come what may in the exam, with some risk taken calculation. So I am not suggesting that NCERT से सारे के सारे questions आ जाएंगे, but you see it gives you a very solid foundation to your preparation. और उसके बाद आप जो एडवांस स्टडी है, एडवांस मटेरियल है, वो कर सकते हैं. There is no doubt that you have to do that, but not at the cost of NCERTs. And finally, authoritative source. So NCERT, you know that this NCERT is affiliated with the government. This is under the government of India. So all the material that is contained in the NCERT books, that is absolutely authoritative. बहुत साल, इनफैक्ट लगभग हर साल एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स में एटलीस्ट 3-4-5-6 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो डाइसी रहते हैं. और अलग अलग जो दिग्गज सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने अपने पर्सपेक्टिव रखते हैं दैट सी इज गोइंग टू बी आंसर, बी इज गोइंग टू आंसर. दे डिफर बेसिकली. देयर इज अ वेरी वाइड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड इन दोज केसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज कंटेन्ड इन द एनसीईआरटी बुक्स. दैट इज गोइंग टू बी योर अथॉरिटेटिव सोर्स. So this is how it is going to fetch you marks also. When in confusion, stick to NCERT, what has been written in the NCERT material. Alright, so this is how important are the NCERT books. But you see, again, I would like to underscore that if you enroll for any coaching institute or for any platform, they would say that you can go through these books. You can go through as if it was a matter of choice, but this is not a matter of choice. It is absolutely critical for your success in UPSC. This is not an either or situation. And most importantly, questions in the exam, direct and indirect. As I said, हर साल
कई सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटीज के एग्जाम में मिलेंगे, स्पेशली प्रीलिम्स में। और एग्जैक्टली क्या फिगर है, नाउ एग्जैक्ट फिगर आई कांट गिव यू, एंड इफ समबडी सेज दैट दिस इज द एग्जैक्ट फिगर, दिस इज अ रेंज, देन आई don't believe that the person is speaking their truth, because nobody knows how many questions are there. But you see, directly and indirectly many such questions are asked. Apparently students को लगता है कि अरे माय गॉड कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द थिंग। बहुत बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, आप उठा के देखेंगे 7th स्टैंडर्ड की, 8th स्टैंडर्ड की, 9th स्टैंडर्ड की, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। So that way you have to ensure guys that NCERTs की सारी बुक्स 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू गो थ्रू देम। These are the books you can see for history 6th स्टैंडर्ड से लेके, which is like very simple, our past से लेके right from prehistoric times to the latest times, that is modern India, आप देख सकते हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड का। So this is what it would be covering. So all the classes, these books are very important, especially आप bottom में देखेंगे class 11th and class 12th का old NCERT, these are absolutely critical, and when I say absolutely I mean it, बहुत ज़्यादा important है। please go through all of them, but you see, pay more attention to these books, old NCERTs, they will really be helpful in building a very solid foundation of history, so that you will never forget it and you will love history then. So this is history. You can take a snapshot, by the way, of this. You can take a screenshot of this as well, because obviously it will take a lot of time to jot it down. So geography की books हैं class 6 से class 12 तक, बहुत important है geography। तो prelims में तो हर साल कई सारे questions Indian geography से आते हैं especially, and a lot of questions are directly picked by UPSC from NCERT textbook, like passes, like rivers, tributaries, confluences, like these parks and the geoclimatic features of India, जो basics, जो physical geography, सारे के सारे जो questions हैं ज़्यादातर वो NCERT से ही आते हैं। That is why NCERT geography is like very important as well. And then you have polity, it will build your basic foundation. For example, what is a federal system, federal structure क्या है, division of powers क्या होती हैं इंडिया में, किस तरीके से democratic politics चलती है, constitution किस तरीके से बना, क्या, what are the core points in constitution, the preamble and the fundamental rights, duties, all those sections and articles. So they would really build your base. All right, if you want, you can ignore the last one, that is class 12 politics India since independence for prelims, because prelims may after independence it won't be asked. This you can do for your mains. All right, so this is what it is for economics, Indian society and science and technology. You can take a screenshot. Science and technology भी बहुत important है, जो general science है, especially biology, right? So protein, vitamins, minerals, photosynthesis, all those things, basic diseases, वो सारे science and technology में यहाँ पे basics हैं, और UPSC में पूछे भी गए हैं सवाल, even though for the last couple of years स्पेसिफिक जनरल साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजी वगैरह से पहले क्वेश्चंस आते थे, अभी ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव मोर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी रादर देन जनरल साइंस। Now let's come to the last part, which is the $1 million question, how to read the NCERTs, कैसे पढ़े NCERTs को। काफ़ी सारे experts बताते हैं NCERTs को ऐसा पढ़ना है, ये strategy होनी चाहिए, वो strategy होनी चाहिए, but I will tell you the strategy is as simple as that, it's the way you want to. Yes. Now if you're wondering that इसमें क्या strategy है, इसमें आपने ऐसा क्या बता दिया, guys, trust me, I have done this multiple times successfully, by the way, that you don't require any strategy. What strategy would you require for reading NCERT? These are very basic books. All I can say is that do them repeatedly multiple times. 6th स्टैंडर्ड से शुरुआत कीजिए। अगर आपको एक सब्जेक्ट का स्टार्टिंग में सारी बुक्स पढ़नी है वो पढ़िए, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री, देन 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, और इफ यू वांट टू like have more diversified taste, if you want to maintain sort of balance, then you can do 6th standard ki history, geography, polity, etc. that way, and then moving on to 7th, 8th, 9th, 10th. But you'll have to do it multiple times.
पहली बार में आपको तो यू सी बहुत कम समझ में आएगा, या थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, वट एवर, डिपेंडिंग अपॉन योर सम बैकग्राउंड और वट एवर. बट सेकेंड टाइम योर अंडरस्टैंडिंग विल बी मच बेटर. एंड सेकेंड टाइम आप हाईलाइट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. एंड द थर्ड टाइम यू डू दैट, it will take much shorter time, and you will have this tremendous amount of explosion in the confidence. Trust me, बहुत ज़्यादा आपका confidence बढ़ जाएगा थर्ड अटेम्प्ट में, जो थर्ड रीडिंग में. एंड देन यू कैन गो फॉर एडवांस मटीरियल, बट नॉट बिफोर दैट. So this is what I would suggest. You can make your study plan according to the way you want. 2-3 महीने लीजिए, 2 महीने you can take for reading the NCERTs, because there is sufficient time as of now, and then you can go for advanced material rather than ignoring the NCERTs and going with the study material that the institutes and the online platforms give you. Yes, you can go through them, so I'm not denying that they are not important, but you can supplement the NCERTs with the notes, not the other way around. Alright, so I hope you understood the importance of NCERTs today, guys, in this session. I thank you so much for watching this session, and also please do subscribe to the channel, and also in the comment box let me know if this session was fruitful, and future में आपको किसी भी topic पे session चाहिए, do let me know in the comment box. Thank you so much. I'll see you next time. Take care.